हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम है वंदिता वशिष्ठ एंड वेलकम बैक टू प्राइस बाबा। iQOO ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था iQOO 7 टारगेटिंग द प्रीमियम मिड बजट सेगमेंट एंड नाउ द कंपनी इज एक्सपैंडिंग और लॉन्च हो गया है iQOO Z3 मिड बजट सेगमेंट में फोन लॉन्च हुआ है, हमारे पास आ गया है। करने वाले हैं हम इसका कैमरा रिव्यू, डालेंगे सारे कैमरा स्पेसिफिकेशंस पर एक नजर एंड विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Let's look at the camera specifications of the iQOO Z3. Well, let's talk about the standard wide-angle 2x, 5x and 10x zoom shots from the iQOO Z3. Standard wide-angle and zoom shots पर आए तो I took two samples on a beautiful morning with that सुनहरी धूप। Flower shot की अगर बात करें तो ये मैंने लिया to emphasize on colors and dynamic range, and the second shot is to focus on details near and far. Thankfully, you get sufficient details यहाँ पर. Both the shots have come out beautifully. Images आप देखेंगे दोनों ही काफी vivid हैं, peppy सी हैं, slightly more saturated than the normal scenario, but very clear. Wide angle shots पर आए तो you will get a wider field of view and I like the area covered. ये leaf shot तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है like a legit painting on a canvas. Details में फर्क is evident zoom करने पर, but that is due to the difference in sensors. 2x zoom shot पर आए तो flower shot to be honest is almost as good as any standard shot. Colors थोड़े से खैर और saturated लग रहे हैं than the standard one, but decent usable shot है. Having said वैसे all of this, there's a visible dip in quality. 5x zoom shot is where the quality of the shot starts going south. Clear pixelation आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, but colors stay vivid. 10x zoom shot are not good as expected and we don't usually use zoom shot 10x zoom shot इतने ज़्यादा unless the subject is too far off, तो ठीक है. So guys, now let's move on to the dedicated 64 megapixel shots. Dedicated 64 megapixel shot पर आए तो it is a virtual palette of red and green with super crisp details and dynamic range. मुझे काफ़ी पसंद आया कि iQOO phones में आप देख सकते हैं कि generally there is a vivid shot but not too vivid, I mean just enough, so a good shot. It's time to now look at the close-up and super macro shots from the iQOO Z3. ये जो analysis है just enough vividness वाला, it is seconded when you see the close-up and super macro shots from the iQOO Z3. My muse Mr. Lego Man is captured really well. काफी अच्छी detailing है around the edges and colors काफी चटक है. There's gradual blur in the background as well, making this a very good shot. I was slightly disappointed हालांकि macro shot के दौरान colors and dynamic range are decent, well detected, but there's an artificial red tone in the image. Edge detection भी ठीक है, but details इतनी अच्छी नहीं है जितना मैं उम्मीद कर रही थी, so it could have been better. Absolutely yes, you guessed it right. I was clicking the selfies. तो अब डालते हैं selfie shots पर नजर. I quite like the selfie. Skin tone detection काफी अच्छी है, very close to natural colors. Facial details are decent. I love the fact कि background details are very well detected. Every strand of my hair is visible, so edge detection भी अच्छी है. Filters भी मिलेंगे आपको selfies click करते वक्त, and इस बार मैंने use किया है rainbow effect and well, very aesthetically good looking selfie this one turned out to be. By the way, you get AR stickers also. Well, यहाँ पर आप different filters लगाकर cute pictures click कर सकते हैं. Here are mine. Now let's look at the selfie and rear portrait shots. Selfie portrait में I took two shots. Medium blur shot में subject isolation is really good. Look at the background blur. Slightly aggressive but pretty impressive. And so is the edge detection. Every hair strand is detected very well here. हाई ब्लर में बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा और एग्रेसिव हो जाएगा, बट एज डिटेक्शन की बात करें तो नोटिस कर पाएंगे आप अराउंड माई हेयर एंड शोल्डर दीज सॉफ्ट एजेस आर क्रीपिंग अप एंड हल्का सा एक हेलो इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा. सो दिस कुड हैव बीन बेटर. रियर पोर्ट्रेट शॉट्स पर आए तो एज यूजुअल आई टुक 3 सैंपल्स विद वेरिएबल ब्लर सेटिंग्स. लो ब्लर शॉट में दिस हार्डली एनी विजिबल बैकग्राउंड ब्लर, लेकिन डिटेल्स एंड एजेस आर डिटेक्टेड प्रीटी वेल एंड कलर्स आर विविड. मीडियम ब्लर शॉट पर आए तो सब्जेक्ट हैज गुड डिटेल्स एंड विविड कलर्स. एज डिटेक्शन इज गुड, आप देख सकते हैं अराउंड द हेड, लेकिन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी अराउंड द लेफ्ट शोल्डर, क्योंकि मेरा शोल्डर जो है ब्लर हो गया है. हाई ब्लर शॉट में काफी एग्रेसिव रिजल्ट है और एज डिटेक्शन गोज फॉर अ टॉस हियर.
shoulders completely blur हो गए हैं, and in instances where you need high blur and sharp edges, तो you'll face a problem here. Guys, after the daylight shots and videos, now let's look at the low light selfies and night shots. Low light selfies पर आए तो low light selfie is underlit and pixelated, grains ज़्यादा है, but I like how all the features are well detected despite lack of light. Night mode on करके I look like one of those illustrations that you see on Instagram na, animated sort of. I kinda find this cool, so might post on my Instagram, but it looks like an overdose of beauty effects and I must admit कि features well detected हैं, but आप इसे शायद use ना करें. Now real looking shot पर आए तो ये flash on करके ही मिलेगा, but light आ गई है face पर flash से, लेकिन details नहीं आई हैं और background is still dark and the shot looks washed out, still grainy. तो features are detected now, लेकिन it still needs improvement. The standard night shot is fairly dark. The only illuminated spot in the center of the frame is because of the street light. Corners of the frame are pretty dark. वहीं जब same spot पर night mode on करके shot लिया तो you can see कि एक considerable amount of difference आप देख सकते हैं दोनों samples में. The dark grey sky is a couple tones lighter in the night mode on shot. Colors are more profound, especially that red in the left corner, and the entire frame gets more light. सेल्फी वीडियोस पर आए तो 1080p 30 fps इज द हाईएस्ट रेजोल्यूशन और मैंने दो सैंपल्स लिए, एक घर के अंदर और एक बाहर पार्क में जहाँ पर काफ़ी सनलाइट थी अराउंड मी. दोनों ही सैंपल्स में आप देख सकते हैं कि डिटेल्स और वेल कैप्चर्ड. कलर्स हालांकि उतने विविड नहीं है, स्लाइटली वो फेडेड से फील आएगी जैसे रियर वीडियो में थी. स्किन टोन डिटेक्शन इज गुड, फेशियल डिटेल्स आर डिसेंट, वीडियोज डिस्पाइट मूवमेंट आर प्रीटी स्टेबलाइज्ड. आप बाय द वे ब्यूटी मोड ऑन करके भी वीडियोस बना सकते हैं एंड मैंने यहाँ पर फेस बफिंग फीचर यूज़ किया है तो स्किन काफ़ी ब्लेमिश फ्री दिख रही है. रियर कैमरा वीडियो क्वालिटी में हाईएस्ट रेजोल्यूशन इज द 4K 60 fps और मैंने दो सैंपल्स लिए हैं, वन इन 4K 60 fps, वन इन 4K 30 fps. लेट मी शो यू बोथ ऑफ देम इन सक्सेशन. Honestly, both videos are decent. I would say average. Colors weren't as vibrant and slightly faded सी feel आ रही है मुझे. 4K 60 fps वाला वीडियो is better in terms of metering, overall details and colors out of the two. Also दोनों हैंड हेल्ड वीडियो हैं तो स्लाइटली शेकी फील आएगी, लेकिन उसके लिए आपको अल्ट्रा स्टेबल मोड भी दिया गया है, बट वहाँ यू विल हैव टू स्विच टू 1080p 30 fps रेजोल्यूशन. वाइड एंगल वीडियो भी आप बना सकते हैं, यू कैन मेक इट बट ओनली एट 1080p 30 fps रेजोल्यूशन. चलिए आखिर में वर्डिक्ट पर आए तो स्टैंडर्ड वाइड एंगल 2x जूम शॉट्स वर अ डिलाइट टू क्लिक, सो वाज द डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल शॉट. सेल्फीज एंड फ्रंट पोर्ट्रेट शॉट्स वर गुड टू. इन केस यू लुकिंग फॉर अ व्लॉगिंग फोन तो मैं बता दूं कि वीडियो क्वालिटी फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड रियर was decent, but it could have been better. Well people, this was all about the iQOO Z3's camera setup. कैसे लगे आपको इसके camera specification? Do let me know in the comment section below. And in case you like this video, then do like it, share it and subscribe to our channel. It's a very simple drill and you know it. Till then, this is Vandita Bashir saying goodbye.